मोटे मोटे इन्होंने 2-3 चेंजेस किए, इन्होंने रेट्स में चेंजेस किया। बेसिकली 7 लाख तो वही था, 7 लाख में तो वो बात नहीं, 7 लाख तो टैक्स भी जाए। और उन्होंने रेट्स में चेंज ये किया, उन्होंने ये कहा कि ये जो रेमिटेंसेज हैं, अगर मान लिया जो रेमिटेंसेज अदर देन मेडिकल पर्पसेज या इस तरह से करके भेजे जाएंगे तो 25% रिडक्शन होगा उसमें। उन्होंने रेट को बढ़ा दिया, इसलिए रेट बढ़ा दिया, टीसीएस का रेट जो टैक्स कलेक्टर जो 20% था। उसके अलावा उन्होंने और एक प्रोविजन में डाला, ये डिफरेंट सेक्शंस में ये है, एक और प्रोविजन में डाला कि अगर आप कोई आउटबाउंड फॉरेन के अंदर पैकेज बुक करते हैं या कुछ इस तरह से जो भी पैकेज है तो उसमें 25% टीडीएस है। पैकेज मींस टू इसमें इसको क्लैरिफाई करिए। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि सपोज आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जाने के लिए आपने किसी कोई पैकेज खरीदा, फॉरेन का पैकेज खरीदा, कि आप होते हैं ना स्टार एयरलाइंस, ये थॉमस कुक, ये सब होते हैं ना, इसके अंदर होता है। तो इस तरह का जो करेंगे तो उसमें भी टीसीएस है, उसमें आपको 25% का आपको टीसीएस लगेगा उसके अंदर। Sir, it is exceeding 7 lakhs. Provided it is exceeding 7 lakhs. Yes. ये 7 लाख तो ब्लैंकेट है ही है। 7 lakhs का यस। तो ये इस तरह का प्रोविजन उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने अगर मान लिया आप ये कौन सा सेक्शन है? ये 206C के अंदर प्रोविजंस हैं टीसीएस के। और रेमिटेंस में भी आपने बताया, सपोज रेमिटिंग मनी अब्रॉड। यस अगर इफ यू आर द रेमिटिंग, जैसे होता है ना बैंक में आप जाते हैं, बैंक में आप कहते हैं कि आपका बेटे बाहर रहते हैं, आपको उनको पैसा भेजना है ना। तो अगर मान लिया आपको पैसा भेजना है तो एजुकेशन पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए लोअर रेट्स हैं, बट अगर आपको अदर देन मेडिकल या गिफ्ट करके भेजना है, आपको कुछ करके भेजना है तो तब भी आपको टीडीएस उसमें भी है, मतलब मेडिकल में भी है, एजुकेशन के अंदर भी है, लेकिन उसमें लोअर रेट ऑफ टैक्स है, ये उसमें 5% और 1.5% तो इस तरह से है। पर अगर मान लिया अदर देन मेडिकल एंड एजुकेशन पर्पस बोल रहे हैं तो फिर आपको उसमें आपको टीडीएस उसमें भी है, आई थिंक 20% है, 25% है, 5% जो पहले था, जो पहले 20% था। हाँ, इसके अंदर 25 किया है इसके अंदर। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस जो अब जैसे अब आपका क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से, ये इस तरह से रेट बढ़ गया है क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, सबके इंटरेस्ट का रिलेटेड है। जिस जो इस रास्ते से गुजर रहा है उसी को पता है कि भाई टीसीएस होता है, ये हमको रेमिटेंस भेजना है तो इसके अंदर ये टैक्स करना है। सो दीज आर द प्रोविजंस फॉर द टीसीएस जो आपको शायद पता होनी चाहिए। तो ये इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए। इनको जहाँ से इम्प्लीमेंट हुए थे, अक्टूबर 23 से इम्प्लीमेंट हुए थे ये, तो इनको वहीं से रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया है इस तरह से। आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है वो जो नवंबर दिसंबर में रेमिटेंस कर चुके हैं वो जो लोग वो उनसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। बट ये तो एप्लीकेबल अप्रैल से होगा नहीं, इसके अंदर ना ये पुरानी डेट से किए हैं उन्होंने, अक्टूबर 23 से ही कर दिया है इसको। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे करके उसको किस तरह से करके वो मतलब उसको ऑपरेशनल गाइडेंस कैसे होंगी, क्योंकि जो रेमिटेंस कर चुके हैं टीसीएस हो गया, जमा हो गया, वो क्या करेंगे लोग पता नहीं। तो बैकडेट के करने में तो काफी कंफ्यूजन होगा। हाँ, कंफ्यूजन है इसमें, मेरे को भी आई एम नॉट श्योर कि इफ आई हैव रेड रॉन्ग और या पता नहीं, थोड़ा सा है इसमें कंफ्यूजन, समथिंग इज टू बी आई मीन क्लैरिफाइड इसके अंदर। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस जो इसके अंदर आए हैं। मतलब बेसिकली स्टार्टअप का तो एक है ही है, बाकी टीसीएस से रिलेटेड थोड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं जो सब थोड़ा सा जानना चाहिए। बाकी प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है कि भी आपको रिट्रेशनल वगैरह की जो सारी बातें, तो दीज ऑल सेक्शंस आते हैं जो इसके अंदर है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंज उन्होंने आपको प्रपोज किया है, और जिस तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो उसी तरह से है, जैसे न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम था वो उसी तरह से है। मतलब आप आइडिया होगा ना आपको, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम जो टैक्स का होता है इस तरह से करके। तो जैसे
वो उसी तरह से करके अभी उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में जिसमें बजट फुल बजट आएगा तो उस टाइम के ऊपर वो उसके ऊपर कुछ काम करेंगे। सो मैं एक चीज़ को आप लोगों से और अपील करना चाहता हूँ इस टाइम के ऊपर कि देखिए ये तो इंटरिम बजट है, सारा कुछ ठीक है। अब मैं बात करूँगा लाइक फ्रॉम द एनएमए साइड, है ना। मैं इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को ड्यूअल नोट करना तो मेरे को तो दोनों तरफ थोड़ा देखना है। हमारी एक सोचना है कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग इंटरिम बजट आया है, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के मन में जैसे पूरा बजट आया नहीं है, आप अभी किक स्टार्ट तो हो गया, थॉट प्रोसेस तो किक स्टार्ट हो ही गया ना बजट के बारे में कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स हमारे मतलब बजट के अंदर कहीं पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन दें, एनएमए की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दें, कि ये चीज़ों को भी कंसिडर करिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग हमारे साथ शेयर करिए। हमारी एक इंटेंशन है जो हम सर्कुलेट करेंगे कि हम लोग महीने 1.5 महीने जिसमें गवर्नमेंट बन जाएगी उसके बाद में खुद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एकेडमी की साइड से वी विल सेंड अवर दिस डॉक्यूमेंट कि आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। और करें नहीं करें तो आई डोंट नो मतलब कैसे होता है, बट स्टिल वी कैन जस्ट पुट फॉरवर्ड कि भाई हमको यस pardon Are you going to represent a direct exit board or indirect board? दोनों सर आप ये बताइए कि मतलब आप ये मेमोरेंडम की बात करें जो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा कन्फाइन नहीं है हम लोग। हाँ मैं सर ये जानना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पिछले 10-12 साल से जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स हैं, कोई बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। तो सर वो आपका फोन सबने सुन लिया और हमारे फोन किसी ने सुने नहीं, बड़ी क्लास फर्क है। बताइए। तो सर ने ये कह रहा था कि एक बहुत पुराना गवर्नमेंट की कमेटी रिपोर्ट है जिसमें सेना का है कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं दैट विल लीड टू द इन्फ्लेशन। आप 10 साल तक यदि सेम रखते हैं तो एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द टैक्स। यस बिकॉज़ यू आर लूजिंग द परचेजिंग पावर यस बाय द इयर्स एंड बाय द डेज। तो ये गवर्नमेंट का एक्सेप्टेड कमेटी है 2010 के आसपास, 14 साल हो गए और इन्होंने इनकम टैक्स रेट भी चेंज नहीं करे, करेंगे थोड़े बहुत करेंगे, एक्चुअली वो कर नहीं रहे क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, आप स्लैब तो बढ़ा नहीं लो। तो ये रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि स्लैब बजाय इसके एक बार स्लैब रीच करके उसको इन्फ्लेशन से लिंक कर दिए जैसे कि प्राइस वेरिएशन में होता है। एक्चुअली क्या है, बात तो ठीक है आपकी कि इन्फ्लेशन का एक, जैसे मैं अभी आपको बीच में बोल रहा था 25,000 10,000 में, उस समय तो बहुत बड़ी बात नहीं आई थी, गवर्नमेंट भी सोच रही है क्या यार 10,000 25,000 के पीछे पड़े हुए आप लोगों के, लाखों करोड़ों वालों को पकड़ो। तो वो इन्फ्लेशन से करते करते आप 25,000 10,000 के लिए मटेरियल हो गए, उन्होंने उसमें स्कीम निकाली थी, उन सबको छोड़ दो भाई 10,000 25,000 जिनके करते हैं ना, वो सही बात नहीं, मैं आपकी बात पर आता हूँ। तो पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है कि इस, लेकिन इसके अंदर क्या होता है थॉट प्रोसेस, शायद जो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चलता है गवर्नमेंट का भी, कि कोई भी मैकेनिज्म होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना बिल्कुल डायरेक्ट कॉमन मैन से बिलोंग करता है कहीं ना कहीं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसीज घुसा देंगे ना बीच के अंदर, ये उससे रिलेटेड होगा, टैक्स विल बी देयर इनटू इन्फ्लेशन रेट इनटू देयर दिस कैलकुलेट कर दो भैया, तो कैसे करेंगे? तो वो शायद वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम पर ऑन द पॉपुलर डिमांड या अपनी स्ट्रेटेजी के तहत में रेट तो बढ़ाते हैं। वो अलग बात है कि हमको उस स्पेस में नहीं लगते जिस स्पेस में वो बढ़ने चाहिए। नहीं सर, दो बातें हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो पिछले 12 साल से रेट बढ़ाई नहीं, तो जो 12 साल पहले स्लैब थे वही खाते हैं, बिल्कुल इन्फ्लेशन उसका 200% बढ़ गया, तो एक्चुअली 100 रुपये हुआ 30-40 रुपये है। तो एक तो ये नहीं कि उन्होंने बढ़ाए स्लैब, दूसरा उसमें फेयर वैल्यू भी नहीं आती, तीसरा सर इसमें हर कोई कॉमन मैन पे नहीं कर रहा। ऐसा ऐसे देखा होने की, तो आपने बोला कि 8 करोड़ लोग फाइलर तो उसमें 3 करोड़ लोगों ने अलग टैक्स दिया, बाकी 0 देखिए ऐसा बात है, उसमें से लेस देन 1,000 2,000 वाले फर्दर दो सर एक्चुअल टैक्स उसमें 4,5 लाख रुपए रहेंगे। आपको करेक्ट बात है, मैं आपको डेटा आपको शेयर करने नहीं आपका डेटा ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं, ये 100 करोड़ की पॉपुलेशन मतलब उसमें भी था 9, अभी कल परसों एक ना डेटा आया था पेपर के अंदर भी था, वो शायद इनके उसमें भी था, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि यूएस की शायद 50-60% पॉपुलेशन टैक्स देती है, जर्मनी की इतनी देती है, उसकी इतनी देती है। अरे भाई वो ठीक बात है,
अब यूएस की पॉपुलेशन भी तो 1 करोड़ है इंडिया से। सर आप सोचिए कभी कि डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं 40% आपने जोड़े या 17 या जोड़े, those are at least 95% of that money is contributed only by non-taxable. हमारे 140 को खाली 40 लाख दे रहे हैं, उसमें भी आप फर्दर डेटा देखेंगे ऊपर, तो ऊपर के लोग 80% उसको से 1 लाख होगा। सर दिक्कत क्या है इसमें कि ये कॉमन मैन नहीं है सर, और दिक्कत क्या है खाली सैलरीड क्लास या लोग तो नहीं चुका पा रहे हैं वो देते हैं, बाकी बिजनेस क्लास और लोअर क्लास जिनका टैक्स का बिजनेस है वो टैक्स देते नहीं है सर। आप देखिए कि हमारा टैक्स जो है वो 4-5 लाख रुपए शुरू हो जाता है, कितने लोग सर मैं आपको चीज बोलूं, आप जो बोल रहे हैं ना ये पॉपुलर बिलीफ पर बोल रहे हैं। सुनिए मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आपके थॉट प्रोसेस को इवोक करता हूँ ऐसे करके। वो बात ठीक है आपकी कि टोटल 98 करोड़ है जिसमें 8 करोड़ रिटर्न फाइल होती है, 98 करोड़ को फाइल करनी चाहिए, मतलब 90 और एडेड इनकम है 98 करोड़ की, 8 करोड़ फाइल करते हैं, 10% फाइल करते हैं। उस 8 उसके अंदर भी कम से कम जो 80% है वो टॉप के, मतलब मेरे ख्याल से शायद 50,000 या 1 लाख लोग ये कर देते हैं ना, ऐसे करके वो ये बात बोलते हैं। लेकिन क्या है कि उसको टाइप कर दे, वो जो नीचे वाले लोग हैं ना, नीचे वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनको नंबर्स मैं कहता हूँ 8 करोड़ में से 50 लाख लगा दो, 7.5 करोड़ इनटू उसको तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी उनके जो 50 लाख है उनको अपनी वैल्यू से कर दो, बराबर हो जाएगा दोनों का। ऐसे हो नहीं रहा ना सर, डेटा इज सेम अदरवाइज व्हाट यू आर सेइंग इट इज नॉट हैपनिंग देयर इन द 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोग 0 पैसा देते हैं, 3 करोड़ फाइल करते हैं, 3 करोड़ में से कम 2.5 करोड़ पैसा देते हैं, 1,000-2,000 रुपए। बट इन एनी केस मैं आपकी बात से पूरी तरह से मैं आपको इग्नोर, मतलब बात को मैं आपकी काट नहीं रहा हूँ, मतलब मैं आपकी बात को बस ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं। हम जैसा आपने एक पॉइंट एक रेज किया है ना, एक पॉइंट रेज किया, स्ट्रांगली रेज किया, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो होते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी उसमें मेमोरेंडम में लिखें और हम लोग उनको दें विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक चीज मैंने बोली कि 50 लाख ऐसे है, 7.5 करोड़ ऐसे करके है, एक चीज आपने बोली, हम एक बार टेस्टिफाई करते हैं कौन करेक्ट बोल रहे हैं ना, शायद अगर वाले वर्जन आपका भी सही है तो मतलब कायदे में फिर वो जाने का बनता है, क्योंकि हम बोले उसको मेरा पॉइंट रिक्वेस्ट ये थी कि हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए Yes. जीरो स्लैश में इंस्पिरेशन से लिंक करना। एग्री मैं रिक्वेस्ट तो डेफिनेटली करेंगे, मतलब उसकी कोई बात, मैंने कहा ना मेमोरेंडम कहीं को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हमारे को, जिसकी बात हम कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था बेसिकली, आप लोग ईमेल से ना अपने पॉइंट्स वगैरह मिश्रा जी के पास या इसके अंदर 2-2, 4-4, 3-3 जो भी जिसके भी पॉइंट्स माइंड में आते हैं उनको आप भेजिए, हम उन सबको कंसोलिडेट करेंगे, कंसोलिडेट करके एनएमए के प्लेटफॉर्म पे फिर पब्लिश भी करेंगे कि ये मेमोरेंडम जा रहा है इसके अंदर गवर्नमेंट के पास है, और हम उसको भेजेंगे गवर्नमेंट के पास। आपका पॉइंट उसमें वैलिड मतलब हो ही सकता है डेफिनेटली, उसमें कोई बात ही नहीं। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो भी पॉइंट माइंड में ऐसे आ रहे हैं, दिस इज वन पॉइंट, बट इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। रेमिटेंस की जो बात कर रहे थे, इतना टीडीएस कटे क्यों कटेगा, इतना मैं मगर मान लें मुझसे पूछो मैं तो यार ये क्यों कटेगा, मैं यहाँ अपनी इनकम पर टैक्स दे रहा हूँ और टैक्स के इनकम में रेमिट कर रहा हूँ, भाई तुम कौन होते हो उसमें से टैक्स काटने वाले, तुम क्यों होते हो? जब मैं ऑलरेडी टैक्स इनकम के को मैं भेज रहा हूँ, रेमिटेंस कर रहा हूँ, आपको पैसे दे दिए मैंने, आपके जो हिस्से के पैसे होते हैं, फिर आप मुझे सिर्फ 25% काटेंगे, क्यों काटेंगे? मतलब हर आदमी का अपना अपना। अब मैं आपको फैक्ट बताऊं, दिस द रियल एग्जांपल, मैं आपको टीडीएस की बात बताता हूं, ये जो है कि मेरे साथ हो चुका है रेमिटेंस करने से पहले तो इनकम टैक्स क्लियरेंस चाहिए होता है ना, ये का सर्टिफिकेट सब चाहिए, वो सब चाहिए होता है, वो प्रोसेस तो है इज टैक्स पेड। अरे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा वैसे शॉर्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम। मैं ये जो मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि ये टीडीएस कटने वाली बात है, मेरी अपने पर्सनल मेरा अपना केस हुआ, मैंने बच्चे को अपने पैसे भेजे, टीडीएस काटा, उसको बैंक में टीडीएस काट लिया, उसके बाद वो गवर्नमेंट तो कहती है इस टीडीएस को आप रिफंड क्लेम कर लो, वो वहाँ पर एक्टिविटी नहीं करते, 26 एज में भी आ रहा है सब कुछ आ रहा है, एक्टिविटी नहीं करते, वो मिलेगी रिफंड। मतलब हम करते हैं 25% होता है टोटल अमाउंट, जैसा मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ नहीं होगा, ऐसे केस बहुत हैं। हां वो टीडीएस का क्रेडिट नहीं देते वो, रिफंड है, रिफंड दे नहीं रहा। तो दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स जो सामने आ रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। आपको
$10,000 से बढ़ा। असल में ऐसा है आप नहीं, वो जो चीज है ना, आप जो कह रहे हैं ना, वो टेम्परेरी तो होगा। जैसे एजुकेशन के लिए पैसा भेजता है, 10,000 से काम क्या चलेगा? मेडिकल का पैसा देना या किसी की चीज, तो 10,000 तो बहुत छोटा है। मतलब वो पैसा जो जिनकी मैं बात करूँ, वो तो 50,000 और 1,000 कि ये जो इंडियन बजट अभी का है, उसके बारे में बताएं, बिकॉज ये तो सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। और मोदी साहब ट्राई कर रहे हैं कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहता है, आजकल जहाँ पे और लोग फ्रीजी कर रहे हैं और इनकम टैक्स का ग्रेजुएट को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल हेराफेरी के साथ सबको मालूम है गवर्नमेंट को भी। अभी मुद्दा ये है कि हर जगह मतलब इसके बारे में बता दें कि काउस का मुंह डिस्कस करता रहेगा कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, गवर्नमेंट वांट्स, लेकिन नो पॉलिटिकल एंटिटी विल ट्राई टू कम हेराफेरी। आजकल तो एक पैसा बढ़ा दो तो उनके वो जगह आ जाते हैं। एक्चुअली सर क्या है कि ये ऐसे चलते रहेंगे मुद्दे, लेकिन कुल मिला के ये है कि एज ए सिटीजन हम लोग मान लिया हैं, तो हमारे ऊपर ये ऑनर्स है कि भाई जो भी कायदे, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या नॉन पॉलिटिकल हो, या मतलब सोच समझ के बनाए गए हैं, हमें तो सभी को फॉलो करना है। अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगी भी हमारे लिए रूल रेगुलेशन बना दिए गए, तो फॉलो तो हमें कभी करना ही है। तो हमारे को तो पता होना चाहिए, हम इग्नोरेंस में ना खत्म हो जाए, मतलब इग्नोरेंस के कारण से हम पेनलाइज ना हो जाए। हम यही बेस्ट कर सकते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि ये कंप्लाइंस हमको करने हैं, और इन कंप्लाइंस को करने से मतलब ये हमारे को मतलब ये फायदा होता है या ये नुकसान है। वो फायदा नुकसान तो होगा ही रेटिंग, उसके अंदर नुकसान तो क्या होगा, कंप्लाइंस से फायदे ही होते हैं जो भी होता है। तो हमको तो पता होना जरूरी है। हम लोगों का एफर्ट यही होना चाहिए कि भैया आपने कंप्लाइंस दे दिया, उस कंप्लाइंस को बनाने से पहले हमने जैसे मेमोरेंडम ये वो एफर्ट सारे कर लिए, हमने बात कर ली, फिर भी उसके बाद में अगर वो कंप्लाइंस बन गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नॉन पॉलिटिकल है, फिर भी तो हमको ध्यान से अच्छी तरीके से कंप्लाई करना चाहिए, टाइम पर रिटर्न फाइल करनी चाहिए, अपने टैक्स पे करने चाहिए, इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एंड यही चीज़ आदमी को सक्सेस बनाती है। नहीं, इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्सेस को अभी बढ़ा है टैक्स, अभी जब से पिछले 5-10 साल में उन्होंने बढ़ाया है, ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि देखिए दो स्पीकर आए, हाँ, मैं थोड़ा सा बहुत चलता रहेगा, बहुत थोड़ा सा इमोशनल उसमें चला गया, तो मैं मेरे ख्याल से आई विल जस्ट क्लोज डाउन माय डिस्कशन ऑन दिस, और हम आगे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने पॉइंट्स लिख के भेजिए एनएमए के अंदर, हम उसको आगे एड्रेस जरूर करेंगे, ठीक है। तो मैं मिस्टर प्रत्युष पराशर को मैं बुलाना चाहूँगा। ही विल बी टॉकिंग अबाउट जीएसटी सब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हमारे डे टू डे उसमें काम के हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे मेरे ख्याल से। आइए। Good evening to all, and we are going to discuss the indirect taxes issues. Though I am here to discuss the indirect taxes issues, but before going further, I am taking a little bit from the mental side. Sir, आप जो क्वेश्चन कह रहे थे ना, वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन रिलेटेड है. Your tax is already linked with the inflation. I am giving you the example. You have the 5 heads of the taxation, right? Capital gain already related to the inflation. It is linked with the inflation. आप जो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेकर के आते हैं तो उसकी टैक्सेशन तो वो ऑलरेडी लिंक्ड है। दूसरा, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो आप लेते हैं, तो जो आपको इनकम आती है ना, वो इनकम ऑलरेडी इन्फ्लेटेड इनकम होती है। दैट इज नॉट द, आप किसी बेस ईयर के बेसिस पर लेकर के नहीं आते। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब आप लेते हैं, रेंटल इनकम लेते हैं, रेंटल इनकम इज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड। रेंटल इनकम ऐसा तो है नहीं कि आप तो 2024 में रेट ले रहे हैं तो वो रेट 1960 के हिसाब से तो नहीं ले रहे, वो तो आप 2024 के हिसाब से ले रहे हैं। सो हमारी जो टोटल इनकम होती है, वो टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। दीज आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, linked with the inflation. So why we are talking about the inflated now? What I have said, I think I have been
I said that the slabs of the income tax, the way Once you are going for the slab, for example, you are saying that you charge money 2014 on 5 lakhs is a slab, for example. Then that 5 lakhs is not 5 lakhs in 2024. Now that has become 2 lakhs purchasing power. I am saying the slabs, I am not saying income. I am saying slabs should be linked with inflation, and that is the recommendation way back has been given by Islam Committee report that has been accepted by government but not implemented. no, So let me one by one. Once you have said, let me one. So I have talked to link the inflation with income tax slabs, not the income. That's point number one. Regarding capital gain. On capital gain, only the income from capital gain from house property is indexed. So capital gain charged at the flat rate when you are, discussing the share capital gain, long-term capital gain. So that's not indexed. Then indexation rate from house property, okay. But this is about the normal income, salary class income. I am paying certain amount of tax against tax income in 2014. So my effective tax rate on my salary is very less. Because purchasing power parity in 2014 is very high, income rate in 2024. So I am sorry sir, my point has been misunderstood. My point was quite entirely different. And not at all, I very humbly disagree that the income is related to inflation. Income is not related to inflation. And that's why the Yashwant Committee report mentioned, I can give the experts of the committee. The Yashwant Committee has given the, when he was the finance minister, he has given this way he has said the union budget also in the committee report. That the slabs of the income tax, for example, million slabs. I got your point. So that has to be, You are explaining your point, that's okay. So that But in nutshell, what you want to say is slabs would be the inflation rate. Yes. And I am telling you the same thing. I hope we are somewhere misunderstanding the slab concept and total income concept, because you can't see both the things separately. Knowledge is always integrated. You have to see the things in the integrated manner. So we are confusing between the slab definition and the total income definition. So we will discuss this. These are the offline. Yeah, of course, we will discuss this. Okay, I'm sorry for deviating from the topic. My topic is direct taxation in GST. So coming to the GST. In GST, we have the one line update in the budget. No changes. No tax rate changes, no HSN changes, nothing is there. So this is the reason. Because GST is an operational law. So since the GST is an operational law, and there are the two reasons. One is the operational law, GST is one. At one hand side, it is the operational law. At other hand side, with the introduction of the GST Council, government can only introduce the proposals in the parliament. They cannot do the amendments because ultimately the amendments is coming only through the GST Council. And since it was the interim budget and GST councils were on the pendulum, because considering the very near election hearing, so they have not touched this operational area of the revenue, which is the GST taxation. Although we have some sort of the expectation from this budget, they will do some proposals on the rationalization of HSN and SSC rationalization. At least the rationalization in case of the export of the services, and particularly the refund related to the export of the services. Because the export of the services in itself is very tricky and they have made it more complicated. So we are expecting they will do something, they will sow some big heart for the refund in related, because refund in relation to the export of the goods, it was quite fine. So this is directly associated with the link and linked with the portal of the government. And once you are exporting the goods, there is nothing to do. Once you have exported the goods, it is considered as the deemed filing of the refund application. And your application, you do not need to file even the refund application if you are doing the export of the goods. I'm sorry, you might be confused. I'm talking about the refund in the export. We have the two types of the refund. One is the refund of the output tax and one is the refund of the ITC.
So when I am telling you you don't need to file the application even, it is only in relation to the output tax which is applicable upon the export of the goods. I am not talking about the ITC. Whenever you will claim for the refund of the ITC, you need to file the refund application. So in relation to the export of the goods, things are quite simple and we are doing it. But as far as export of the services, there is the various issues, and we are expecting that they will show there some big heart for the refund of the refund in case of the export of the services. Next, our bright concern for the whatever the notices in these days we guys or we people are receiving, either on behalf of our client or on behalf of yourself if you are into the running of the business. The cancellation, SCN of the cancellation. Now, what is the reason of the cancellation? A lot of notices department has sent to the person. Why? They send the notices to me, for example, and what they are saying in the notices, your registration, this is the SCN for the cancellation. What is the reason for the SCN for the cancellation? Because one of the person from whom you have bought the goods, their place of business is not in existence, right? I am doing the business with that person from last 5 years. In 2018 they have the place of the business, in 2019 they have the place of the business, in 2020 they have the place of the business. Because of some reason, either because of the reason of the corona or anything else, they don't have the place of the business in 2014. But what the officers are saying, in 2014, because they don't have the place of the business, so I will treat this as retrospective effectively. This is from the 2018. Whatever the credit you have taken from that person, all those credits will be lapsed. All those credits will be reversed. And in this case, there have been numerous quoted which has passed the decisions on this, but the department is not ready to accept till now. So this was the most burning issue which has been faced by the professionals or the person who is carrying on the business in these days. And we are the keen that government will do something or government will come up with the very good decisions in this and in the proposed budget. But the in GST government has, I hope that government has not done this or government has not done this only because of the reason that this is the interim budget and GST is an operational law. So since it is the operational law, so within 30 days of forming of the new government, I am telling you there is going to be a GST council meeting and all the notifications which we are expecting for this budget, all those notifications you will get after forming. So I think in respect of the indirect taxes or GST, I hope you guys have to make the another seminar, because whatever the changes you are going to see after the formation of the government, it will be more than the average. Next one was for example, if we are taking the export of the services. In export of the services, section 16 is there. This is the zero rated supply. And what it says, for any export of the services, there are the 5 conditions you need to, you need to satisfy the 5 conditions. For export of services, the person who is supplying the services, he must be in India. The person who is taking the services, he must be outside India. That's fine. We agree with that. Third condition, that there must be the consideration must be in the forex. Perfect. And even for your knowledge, INR is covered under the forex, freely convertible foreign exchange. So INR is covered. So if you are exporting any services to the Nepal, and if you are getting or Bangladesh, and if you are receiving your consideration in the INR, it will fall within the definition of the forex. So this is the forex one. So what is the most important thing they have missed? They said that the place of supply of services must be outside India. The place of supply. Supplier should be in India. Recipient should be outside India. Consideration must be in the forex. And what is that? Last part is that and most important one. Place of supply must also be outside India. This means even if you are exporting, being a CA, I am suppose exporting, I am giving any services to any person or any company which is located in the Dubai.
So only because of the reason that I have given my services at the Dubai location and the services has been consumed in the Dubai location, it doesn't become the export of service. For export of service, I need to satisfy one additional condition, and that additional condition is that there must be the place of supply must be outside. And for the place of supply outside India, there is the IGST law. In IGST law, they have given the 18 clauses. Okay, what will be the place of supply at which conditions? And in that 18 clauses, there is the clauses, in section 18, there is the clauses. First one is the general clause. In general clause means if your services are not covered under the sub clause 2 to sub clause 18, then your place of supply will be decided as this. And this is the general clause. There is a clause in which they have introduced intermediary services concept. And departments rigorously rejecting the refund on the basis that your services fall within the definition of the intermediary services. And in case of the intermediary services, the place of supply will be the location of the supplier. So if I am giving any services at Dubai location, the person who is residing at the Dubai location, my services has been consumed in the Dubai location. But department says it is what? It is the intermediary services. Hence your place of supply is not outside India. Your place of supply is in India. And since your place of supply is in India, hence this doesn't fall within the definition of the export of services and you are not eligible for the refund. So we are very rigorously listening and I have not muted the TV even for a single minute only to see the GST now. But it was a big disappointment for me. If the source of supply is place of supply to the destination. That is the point. You are talking. This is the English grammatical error. No, this is not. See, the law has their own definitions, law has their own vocabulary. We have the two meanings of a word. One meaning is known as the literal meaning, another meaning is known as the legal meaning. So whenever you will try to interpret the law with your literal meaning, you will get mistake and it will be a biggest accident. So if the law is saying the export of services has to satisfy these 5 conditions, so you can't say no, my literal meaning is saying that no, I am supplying the goods and it should be the export of services. Because lawmakers are good, they are very good in their languages and we can't question their capability. What we can question? We can question their drafting capability. We cannot question their linguistic capacity or anything else. So this is the drafting capacity I am questioning or the procedural part I am questioning. I am not questioning their intellect. I am not questioning their intellect they don't want to do this or they cannot do this. The only thing is that they are doing their drafting at they are doing their drafting with their team and that team is not actually doing the business. When you are going to do the business, there is a lot of the practical things which you face. And this is the reason why the government has made the system of the representations from the different points. This is the only reason. Next, we are expecting upon the clarification from the works contract and the job work, which is the most debated topic in the GST. So we are going to expect this. They will show something for the works contract and the job work services, how it will be done. And even in case of the job works and the works contract, they made confucius entry in the GST because works contract in commercial term is something else. Works contract in GST is something else. Job work in commercial term something else. Job work in GST is something else. So when you are going to integrate the works contract or the job work, and when you are going to integrate it with the direct taxation, indirect taxation, and your accounting principle, it all come out. And this means what? If you will give a bit of the concentration on the concept, so what will happen? What is the works contract in commercial trade? Commercial parallels, what is the works contract? In commercial parallels, we understand from the works contract is that there is a contract in which material and labor both has been supplied. This is the works contract as per the commercial contract.
parlance. What GST said, what is the works contract? GST said works contract, section 2, subsection 116. This is the definition of the works contract in the GST. GST said what is the works contract? Works contract is renovation, original works, repair, maintenance of immovable property and nothing else. So what is the impact on the GST for that? So if you are doing, suppose in your office, you have given a contract of the computer maintenance or the AC maintenance. You have the two types of the contract. One contract is what? With material, another contract is without material. So if there is the with material contract, this is the works contract, you will raise the invoice in the name of the works contract. So once you are raising the invoice for the works contract and you have put the HSN of the works contract, your GST invoice is wrong. Because as per GST, this is not the works contract. Your invoice is wrong. Your invoice will be only correct only if you are putting the SAC of other services. Likewise in the job work, you are giving the job work. What is the job work for the trade parallels? Job work for the trade parallels means applying the work on the product of someone else. This is the job work in case of the normal trade parallels. But what GST says? GST says job work means only if it has been done on the product of the person who is registered under the GST. So what is the impact if you are raising the invoice and if you are doing the job work of an unregistered person, you cannot use the SAC of job work services. You have to use the SAC of other services. Job work might be taxed at 12%, but the other services will be taxed at 18%. So this is what. So these are the HSN and SSC. We have. I was concentrating to the budget only for the HSN and SSC rationalization. HSN and SSC rationalization giving the loss to the person who is doing the business to the tune of the crores only because of this confusion. So how they will, and for example, we are much awaited for the advanced rolling authority and the tribunal from the GST. Only because of non-formation of the tribunal and the advanced rolling authority, we are losing crores, because if we have the confusion upon the HSN, we don't have the any authority over there to whom we should consult, to what should be the correct HSN. And on a day, after 2 years or 3 years, department will send you the notice with the detailed elaboration that whatever the HSN you have been used, that is incorrect HSN, and you have put at the tax rate of 12%, whereas it should be taxed at the 18%. So by the differential of the 6%, you have the notice of demand along with the interest and penalty. So, but how we can overcome this? So we are waiting the government will come up with some sort of the forum where we can represent our problem, where we can where we can take the advices, where we can advise to what can be done. So this is the GST indirect taxes. In indirect taxes we have plethora of confusion right now. And on each day you are waking up and go to the GST site, you will have an email notification. Each day, even, no one can claim that he is the expert of the GST. No one. Whether, in spite of the fact he is putting 24/7 into the GST. No one can claim. So this is one thing is for the GST. So we are very much, and I'm very much sure we have to make once again, and once the government will be formatted after the election, within 30 days, you are going to see the plethora of changes in the GST law. Because, and each will come up with a notification. Further, there can't be any amendment in the GST Act. Sections is not going to be amended, I am telling you again. Sections will be same. What is going to be amended? This is the notification in the rules. Flooded with the rules, GST is flooded with the rules and notifications. It is
quietly like the company law. Company law is the law of the rules, it is not the law of the app. The simply with the GST. GST is the law of the notifications, it is not the law of the sections. If you are going through the sections only in the GST, you are having with only 40% knowledge of the GST law. 60% is in rules and notifications. So next one is that they have made the RCM concept, reverse charge mechanism concept, more complicated, and with each amendment of the RCM, they are doing it more complicated. We are also expecting the clarification upon the 2A and 2B. These two are the monsters for us professionals in these days, 2A and 2B. Because government does not confirm on the point to what they are willing to do. At one hand side, government is saying that you cannot take the credit more than the 2B. Right. First, they have amended the section 16 subsection 4 for the 5th time. 5 times. So, on each year there is an amendment in section 16 subsection 4. So, section 16, which is giving the eligibility of ITC upon which the whole edifice of the GST law is existing, that is not yet established. Section 17, reversal. They are making a mockery of the reversals. So, they are giving in section 17 subsection 5, these credit are blocked. In section 17 subsection 1 and 2, they are giving the provisions of the reversal. These are the situations when you should reverse your ITC. In section 17 subsection 5, they are saying these are the blocked credit. Now see the mockery and see the inconsistency of the law while they are drafting the law. Once they are, what is the difference between the reversal and the blocking of the credit? Reversal means while you are buying the goods, you don't have any idea. But after buying of the goods, you understand that you are not eligible for the credit. I mean, section 17 subsection 2 says that if you are taking a common goods and that common goods is used for the taxable supply and also for the non-taxable supply, then only the proportionate credit you will avail. Right? Fine. So this is the reversal. I mean, when I am taking the common input, I don't know how much proportion will be used for the exempted supply and how much proportion will be used for the taxable supply. That's fine. So when I come up with the final figure, we take the proposal, the proportionate credit will be used. Blocked credit is what? Blocked credit is while you are buying the goods, you know you are not eligible to avail the credit. This is the block. Reversal, while you are buying, you don't know whether you are eligible or not. After buying, subsequently, you come to know that this is ineligible. But reversal is, blocked is what? Blocking is, while you are buying the goods, you know that you are not eligible to avail the credit. And in section 17, subsection 5, blocked entry, they have given what? If the goods are lost, if the goods are stolen, then the credit is blocked. So, when I am buying the goods, how you come to know that good will be lost or it will be stolen? So, these are the things. I hope whatever the things we are having with the GST law are explained, and I felt privileged to have you guys. And thanks.